Good evening students, welcome to Commerce Canpit Odisha. Today we will start with the MCQ portions of the Negotiable Instrument Act. ठीक अच्छी Negotiable Instrument Act जहाँ भी अच्छी it's actually subjective oriented thing. Subjective oriented thing माने कौन ना तुमको मन रखिया जिनसे बेसी अच्छी जिमती आमे देखिलो सेल ऑफ कंसिडरेशन माने सॉरी सेल ऑफ गुड्स एक्ट रे कौन होथिला ना बुझिबा जिनस टिके अधिक थिला किमिति इन द सेंस ना टाइप्स ऑफ सेल जहाँ भी होथिला कि केवियट एम्प्टर कि सब्जेक्टिव मैटर बहुत कम रहुथिला बट एडी कौन गोटे गोटे टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट केते टाइप्स तार अच्छी तार पार्टीज केते जण अछंती टाइम लिमिट कौन से सब जिनस आमे डिस्कस करबा हैला मोस्टली द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स ए फिल इन द ब्लैंक्स जहाँ भी 15 टा आईडी देछि तमे देखिबा पायो कि एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस विल बी रिपीटेड इन द एग्जामिनेशन ठीक अछि तो स्टार्ट करिया ट्राई टू आंसर इट हैला आराम से आंसर करि परिबो क्वेश्चन पढिला परे 3 सेकंड भितरे आंसर करिवार अछि सो हां the first thing is the negotiable instrument act is applicable to dash whole of india इमती केते गुडा एक्ट रे किछि थिबो कि इंडिया रो ओनली पर्टिकुलर कंट्री पर्टिकुलर सिटीज को स्टेट्स को आगा सेटा अप्लाई होची कहिकरी बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया बुझिलो देन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन केबे आसिला सेटा First March 1882 1st March 1882 अच्छा जदि सेटा 1st March 1882 को आसिला तो हाउ आर वी कॉलिंग इट एज 1881 काई कहूछु हमें 1881 ना कथा ही थी केबे पार्टी करिया पार्टी करछन 1882 रे आओ नहीं एक्चुअली जोवियली कहला बट से ठीक कहला 1881 रे सेना कौन है इफेक्टिव एक्जिस्टेंस को आसिला बट इट केम इनटू फोर्स माने केबेडो एप्लीकेबल हैला इट स्टार्टेड गेटिंग एप्लीकेबल फ्रॉम द ईयर 1882 द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 13(1)(a) ऑफ सेक्शन 6 माने एडा होची सेक्शन एडा होची सबसेक्शन एडा होची प्रोविजन सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 13 6a 1a प्रोविजो हैला पचरी परिबो एजा सब जा तीनटा जा क्वेश्चन कोडा हैला आसी परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द अंडरटेकिंग कंटेन्ड इन अ प्रॉमिसरी नोट टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज तो एबे हमें देखिया कोन फर्स्ट प्रॉमिसरी नोट रो मीनिंग कोन हैला फॉर दैट प्लीज कम टू द पेज नंबर प्लीज कम टू द पेज नंबर 134 प्लीज कम टू द पेज नंबर 134 मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ए पूरा पूरी चार्ट तुमको मन रहिले जाएगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रो एमसीक्यू क्वेश्चंस तमे आंसर करि परिबो किछि भी भूल हबनी जदि एडा मन रखि दोछ तो फर्स्ट तमे जानिथिबो कि एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 वी हैव 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कोन कोन अछि हमरो प्रॉमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक प्रॉमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक हेले प्रॉमिसरी नोट रे थाउचंदी दी जण पार्टी जणे होची मेकर आ जणे होची पेई सी कोची कोन इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल प्रॉमिस बाय मेकर टू पे द पेई माने सेथरे कोन प्रॉमिस थाउची कि पर्टिकुलर पर्सन विल पे टू द अदर पर्सन सम अमाउंट ऑफ मनी अनकंडीशनल प्रॉमिस से वर्ड टा अंडरलाइन करो तमे बारंबार सेडा एमसीक्यू क्वेश्चंस रे देखिबो अनकंडीशनल प्रॉमिस अनकंडीशनल प्रॉमिस अनकंडीशनल प्रॉमिस माने कोन there is no particular condition attached to it से कंडीशन को किछि अटैच हेगी नथिबो बुझि पालो ना अनकंडीशनल प्रॉमिस सेडा बाय मेकर टू पे द पेई बुझिला तापर से कहूची एक्सेप्टेंस एथरे किछि दरकार नै बाकी तुमको क्वेश्चन पचरे जिंस कोन
ना ग्रेस पीरियड इज अवेलेबल पेएबल आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम माने एडा रे ग्रेस पीरियड टा अवेलेबल अच्छी एडा इंपोर्टेंट मार्क करो ग्रेस पीरियड इज अवेलेबल ग्रेस पीरियड इज अवेलेबल ग्रेस पीरियड माने कौन माने जदि मु कहि 15th मार्च को माने प्रॉमिसरी नोट भितर कौन अच्छी ए प्रॉमिसेस टू पे बी बाय 15th मार्च 2000 रुपीस हैला एडा होची गुटे प्रॉमिसरी नोट तो ए आसिकी बी को रिक्वेस्ट करला कि प्लीज गिव मी अ ग्रेस पीरियड से कहला कोन ग्रेस पीरियड दे मते मते टिके टाइम दरकार एक्स्ट्रा टाइम दरकार तो ग्रेस पीरियड से दोची तो केबे पेमेंट करबो सी आफ्टर 3 डेज की 4 डेज करबो से ग्रेस पीरियड रो पॉइंट म कहबी इट्स ऑलवेज 3 डेज मिनिमम 5 नहीं मिनिमम 3 डेज इट्स मिनिमम 3 डेज एज पर द एक्ट देखो आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन रे तमरो 3 डेज जदि ग्रेस पीरियड ताको दौची तो 18th मार्च भितर से कौन करियो पेमेंट कर दो तो ए ग्रेस पीरियड रे कांसेप्ट प्रॉमिसरी नोट रे अवेलेबल अच्छी एडा गुटे पॉइंट से पचरी पारिबो नेक्स्ट पॉइंट होची लायबिलिटी ऑफ द मेकर इज एब्सोल्यूट एंड प्राइमरी लायबिलिटी ऑफ द मेकर इज एब्सोल्यूट एंड प्राइमरी एडार मीनिंग कोन देखो तमे माने एडी गुटे अच्छी कोन मेकर आ गुटे होची हमर पेई मेकर माने कोन किए पैसा पाइबो पेई माने जे पैसा दबो तो ये ताकू इधर पैसा दबो माने से इधर पूरा पूरी पैसा रिसीव करियो नाले किछि हेले रिसीव करि परिबन दीडा भितर को गुटे केस हमर हे जिवो तो से कहूची कोन टोटली रिस्क टा के हैंडल करची मेकर कि ता पाखरे आगा टोटल राइट अछि से अमाउंट टा रिसीव करबा पई बुझि पालो देन लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉयर इज कंडीशनल सॉरी एटा तो नेक्स्ट पॉइंट हेला छाड़ो तो एंड मस्ट बी स्टैम्प्ड ए मस्ट बी स्टैम्प्ड अंडरलाइन करो बस जो जो पॉइंट रे बिट क्वेश्चंस हे पारिबो सेडा मार्क करो खाली प्रॉमिसरी नोट रे एति की बुझला क्लियर फाइन एबे देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स ऑफ एक्सचेंज भितरे कौन कौन के थाउची ड्रॉयर ड्रॉई एंड पेई ड्रॉयर ड्रॉई एंड पेई हमें पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट रे देखिबा सेडा नेक्स्ट रे से लिखी जी देखो यू कैन गो थ्रू मुझे सब्सिक्वेंटली बिट क्वेश्चन सहित तो कर दौची गुड़े देख गुड़े प्रॉमिसरी नोट रे से कौन कही मेकर माने पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिसरी नोट मेक्स माने कौन जे बनइबो हु मेक्स द प्रॉमिसरी नोट एंड पेई माने के ना पर्सन टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड पर्सन टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड बुझला बिल्स ऑफ एक्सचेंज रे देखो तीनटा जिनसो ड्रॉयर ड्रॉई एंड पेई द पर्सन हु गिव्स द ऑर्डर टू पे और हु मेक्स द बिल इज कॉल्ड द ड्रॉयर एंड एडी कोन द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड द ड्रॉई माने का थ्रू रे पैसा जिवो पे माने कि द पर्सन टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड क्लियर ए पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट भल से पड़िबो नले कंफ्यूज हे जिवो पेयर पेई थाउची हैला ना एडी कोन अछि ड्रॉयर ड्रॉई एंड पेई अछि तापरे देखो चेक रे किए अच्छी अगेन सेम पर्सन्स अच्छे ड्रॉयर ड्रॉई एंड पेई तीन जन लोक अच्छा क्लियर एब्सोल्युटली क्लियर ना किसी डाउट अच्छी कार से खाली रिप्लेस कर दी चेक माने कस्टमर ऑफ बैंक आसीबो तो सेते से कस्टमर ऑफ बैंक लिखि दी अच्छा हु मे क्रॉस अ चेक किए क्रॉस करि परिबो चेकटा के क्रॉस करि परिबो ना ड्रॉयर द होल्डर और द बैंकर ऑन हुज फेवर द चेक हैज बीन क्रॉस्ड क्रॉसिंग ऑफ द चेक रो मीनिंग मु कहिबी कोन कहथिलो होल्डर द चेक जे तारो ओनर चेक जे साइन करथबो होल्डर माने नै ता जा पखरे पोजीशन थिबो से मे ही और समवन एल्स हु हैज साइंड द चेक दे कैन इजीली द अदर चेक इफ वी आर नॉट done the signature in the check and they will tell that they want to with the but that the bank person the person who is doing keeping the checks he can chila ke behi pariyogi he can't allow unless and until there is an authorized signature no person who is giving the amount he can't allow authorize kari pariboni se amount ta daba pai
जेते जे कौन तार रिक्वायरमेंट्स और सिग्नेचरटा सब जिनस मैच हम है एते डीप जीवा दरकार नहीं माने मु पढ़ाऊँ एक्चुअली कौन पे ना पॉसिबल क्वेश्चंस कवर करियर अछि कहि तो बिल ऑफ एक्सचेंज रे कौन 3 पार्टीज अछंती कहि देली एडा ऑलरेडी पॉइंटटा तापरे कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर अगेन एडी भी किछि कंडीशन रहोनी हैला बट एडी कौन चेक रे देयर इज कंडीशंस देयर मे बी कंडीशंस देयर मे बी कंडीशंस देयर मे बी कंडीशंस क्रॉसिंग टा ओनली चेक रे आगा पॉसिबल हे पारिबो चेक टा आगा खाली क्रॉस हे पारिबो एडी खाली मन रखियो कि लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉयर इज कंडीशनल एंड सेकेंडरी एडी लायबिलिटी ऑफ द मेकर इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट गुटे जिनस देखो ड्रॉयर रो वर्ड जेतळ को पळा आसुची ऑलवेज इज सेकेंडरी और कंडीशनल मन रख ड्रॉयर रो वर्ड पळा आसले ऑलवेज सेकेंडरी और कंडीशनल कोन पे इंदी हला देखो मान सुनो एडी रहिछन्ती दी जण पार्टी प्रॉमिसरी नोट रे मेकर और पेई तो डायरेक्ट कांटेक्ट होची गुट्टा का पर्सन अछि जागु से डायरेक्टली किछि रिसीव करबो बट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक रे कोन होची तीन जण पार्टीज इन्वॉल्व हेगी थाउचंती तो दैट्स व्हाई ड्रॉयर जहा भी लायबिलिटी अछि सेडा ऑलवेज कंडीशनल एंड सेकेंडरी बुझि पालो आयुष बुझिला कोडी रहल ना कोन कंफ्यूज हेलो नहीं मार्क कर लो एबे आसो एबे ए जिनसडा आंसर करो fill in the blanks the undertaking contained in a promissory note to pay a certain sum of money is dash very good unconditional कौन पे certain sum of money तो अनकंडीशनल कौन पे हमें देखिलु सेडा किछि कंडीशन ता सहित अटैच हेगी नै an instrument incomplete in one way or the other inchoate instrument but ता पे हाँ inchoate but we are pronouncing it as inchoate okay types of instruments पाखु आसा कोडी अछि 128 या नहीं खाली सेडा नहीं मु कहिथिली ना एडा पूरा डिस्कस करी खाली अच्छा देखो टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रे वी हैव टू टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वी हैव टू टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वन इज द स्टैट्यूट एंड वन इज द कस्टम और यूसेज माने देखो सी कहूँ कौन जान ना जनरली आम पाखरे कौन खाली 0 टू केते 9 डिजिट्स अच्छी एडा होची कौन हमको स्टैट्यूटरीली कुआई कि एति आगा डिजिट्स अवेलेबल अच्छी हमको कहिकरी बट यूसेज रे हमको केते नंबर अच्छी सेडा हम आज जे काउंट करि पारछु कि नाही इनफिनिट नंबर ऑफ नंबर्स अच्छी हेले यूसेज रे केबे ले कोइले जिंसडा आसी पारिबो बट स्टैट्यूट माने कोन किछि जिंस जोडा से फिक्स करिकि कहिथिबो के कहिबो ना लॉ हमको प्रिस्क्राइब करिकि कहिथिबो हैला तो स्टैट्यूट माने कोन Section 13 of the Act provides that negotiable instrument includes a promissory note, bill of exchange and check whether payable to bearer or order. माने कौन तुमको क्वेश्चन पचारिबो कि instruments negotiable by statute माने negotiable instrument रो टाइप्स जहाँ भी अच्छी statute कौन कहूची बुझिला ना पचारले तमे ए तीन डागा लिखिबो promissory note, bill of exchange and check तो पाखरे लेखो possible question एडा what are the types of instruments what are the types of instruments as per the negotiable instrument acts statute negotiable instrument acts statute negotiable instruments act statute एडा होचे हमरो पॉसिबल क्वेश्चन तो स्टैट्यूटरी मेथड रे खाली हमको तीन प्रकार आगा अच्छी हैला आ किछि काउंट करि परिबोनी 3 टाइप्स कोन कोन अछि हमरो प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक मन रहला तापरे से कहूची किछि जिंस अछि जोडा कि कैरेक्टर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय कस्टम और यूसेज माने किछिडा कैरेक्टरिस्टिक्स गोटे एलिमेंट सहित मिक्स हेले माने टिके मैच हेले वी विल बी कॉलिंग देम एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स
माने मनर चेक नहीं बट किछि से सिग्नेचर ब्लैंक सिग्नेचर करके दे देला कहला कि जदी किछि हे पारियो यू कैन स्यू ऑन मी किछि अमाउंट किछि जिंस लिखि के लीगल डॉक्यूमेंट हिसाब रे दे देला तो इट्स मिक्सिंग अप विथ समवॉट लाइक प्रॉमिसरी नोट चेक सब जिंस रे किछि किछि कैरेक्टरिस्टिक्स अछि बट तर पर्टिकुलरली ना किछि नै तो मु कहया कोन चाहूची जदी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रो कैरेक्टरिस्टिक्स किछि जिंस सहित मिसुची देन आल्सो हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहिबा बट स्टैट्यूटरी मेथड रे तीन डागा अछि जनरल यूसेज रे वी कैन से एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो एमती कौन अच्छी देख फर्स्ट से कहूँ डिविडेंड वारंट माने डिविडेंड दबो कहीगिरी किसी से वारंट इश्यू करिकी रखिबो कि मैंडेटरीली हमें दबो सर्कुलर नोट्स बियरर डिबेंचर्स एक्सेट्रा माने किछि भी लॉफुल डीड डॉक्यूमेंट बुझिला ना सब जगह होचे हमर कोन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय कस्टम और यूसेज बुझिला तो तुमको एडी पॉसिबल क्वेश्चन होची ए तीनटा एलिमेंट्स देगिरी टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पचरी पारे फर्स्ट ऑप्शन नेगोशिएबल बाय स्टैट्यूट सेकंड इज नेगोशिएबल बाय कस्टम और यूसेज थर्ड इज बोथ ऑफ द अबव फोर्थ इज नन ऑफ द अबव बुझला यूजिंग दिस 3 पॉइंट्स बुझला ना एलिमेंट्स होची एक ए एलिमेंट्स को धरि कि से क्वेश्चन पचरी फाइन क्लासिफिकेशन देखो बियरर माने होची अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी बियरर व्हेन expressed to be so payable or only or last endorsement is a blank endorsement bearer check और payable check देखो एडी होची कोन bearer रली कहिले कोन पर्टिकुलरली गुटे पर्सन जी हैंडल करथिबो ता पाखरे सब जिंस राइट फिक्स हेगी थिबो एडी होची कोन गुटे पर्टिकुलर पर्सन को से ट्रांसफरेबिलिटी ता पाखरे थिबो बुझिला ताकू कुआबो कि ए पर्टिकुलर पर्सन को दे कहले से दे दो expressed to be payable सेटा बेसिक क्वेश्चन थिला तमरो इंपोर्टेंट होची इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट एंड इंक्वेट इंस्ट्रूमेंट जोड़ा कि बारंबार आस्था होची ए दिडा एम्बिगुअस एंड इंक्वेट इंस्ट्रूमेंट तीनटा जिंस जगह बारंबार से पचार था होची इनलैंड इंस्ट्रूमेंट रे देखो a bill promissory note or check if both are drawn and payable in India on a person resident in India is said to be inland bill दीटा पॉइंट्स अंडरलाइन करो ड्रॉन माने बनै चंदी इंडिया रे पेबल होबो इंडिया रे के दबो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया आगा जदी दबो तो एटा कोन हला हमरो इनलैंड बिल फॉरेन बिल माने कोन व्हिच इज नॉट एन इनलैंड बिल हां बुझिला इट इज नॉट एन इनलैंड बिल माने आरो ठीक ऑपोजिट होची फॉरेन बिल डिमांड बिल माने कोन एक्सप्रेस टू बी सो पेबल और ऑन व्हेन टाइम इज स्पेसिफाइड ऑन इट तमो कुआइछि कोन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड भितरे तमे पेमेंट करार अछि ए पर्टिकुलर पर्सन को तमे पेमेंट करिवार अछि कहिगे सो दिस इज डिमांड इंस्ट्रूमेंट अंडरलाइन करलो तापर देखो पेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड और हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट व्हिच इज सर्टेन माने से कहिछि कोन पैसा केबे दबो ये कहिछि कोन 3 मास परे दबो बट ये कहिछि कोन जदि ए हार्वेस्ट माने मु स्वीट कॉर्न ता हार्वेस्ट में पकेछि स्वीट कॉर्न ला जदि प्रोडक्शन हे जिवो ता परे तू मते पैसा दबो तो से कोन कहउछि टाइम पीरियड ता कोनी बट गुटे स्पेसिफाइड इवेंट जोडा कि बाध्य रे हबो से इवेंट सरला परे तमे पैसा दियली कहउछि तो एडा कोन कहया हमें टाइम इंस्ट्रूमेंट कहबा एडा को टाइम इंस्ट्रूमेंट कहउछि ना हां एडा होछि टाइम इंस्ट्रूमेंट आगडा होछि कोन हमरो डिमांड इंस्ट्रूमेंट बुझिला ना किछि डाउट अछि बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहि दोछ एडी अंडरलाइन करो ड्रॉन एक्सेप्टेड और एंडोर्स्ड फॉर कंसीडरेशन किछि पैसा थाइगिरी कंसीडरेशन थाइगी जदी गुटे बिल्डा किछि भी होउची हैला ना ड्रॉन एक्सेप्ट और एंडोर्स माने आ जण को दबार ट्रांसफर करिबार तो एडा कोच हमें कोन जेन्युइन बिल जदी विदाउट कंसीडरेशन देखो विथ कंसीडरेशन होची genuine bill without consideration होची accommodation bill without consideration होची कोन हमरो accommodation bill आउ जदी कोन when drawer or payee or both are fictitious माने particularly fix हेगी नाही के ले भी हेई पारिबो particularly instrument frame करला को गुटे लोक के फिक्स हेगी नाही तो इट्स ऑलवेज अ फिक्टिटियस बिल
तीन जिनस बुझिले ना का डाउट अच्छी कोडी स्टक अप हेलो कि एतिकी बुझा पड़ा नेक्स्ट पॉइंट को जीवा तो क्लीन बिल माने होची कोन ना मैं नो डॉक्यूमेंट्स सॉरी मोल्टा लिखि देली इडी कौन लिखी मैं देख when no documents relating to good are annexed to the bill किछि अटैच हेनी not attached तो एडा होची हमर क्लीन बिल आ एडा कोन कहियो हमें डॉक्यूमेंटरी बिल माने किछि डॉक्यूमेंट्स जदी अटैच हे कि अछि तो इट्स डॉक्यूमेंटरी बिल जदी किछि डॉक्यूमेंट्स अटैच हे कि नै तो एडा होची कोन हमर क्लीन बिल दैट्स इट बुझला नेक्स्ट पॉइंट को जीवा फाइन देखो ambiguous instrument देखो when an instrument due to faulty drafting may be interpreted either as a bill or a note माने से कहूँ कौन either सेटा promissory note भी काउंट हो पारियो bill भी काउंट हो पारिबो माने से इमिति ड्राफ्ट करछि भूल भाल हिसाब रे ड्राफ्ट कर देछि जेमति कि से इंस्ट्रूमेंट कैन बी कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट मेजर पॉइंट एडा रो होछि एडा लेखो इंस्ट्रूमेंट कैन बी कॉल्ड a promissory note or a bill of exchange तमे जोड़ा हेले भाब पारियो promissory note or bill of exchange promissory note or bill of exchange is known as an ambiguous instrument ambiguous रो meaning होची confusion बुझले ना confusion ambiguous instrument तो कंफ्यूजन केबे केबे एराइज हबो से जानिनी सेडा कोन ट्रीट करर अछि सेतळ गो एराइज हबो अमाउंट इज स्टेटेड डिफरेंटली इन वर्ड्स एंड फिगर्स से फिगर से गुटे अमाउंट लिखिछि वर्ड से किछि भूल भाल हेकी लिखि देछि तो जो प्रकार भी कंफ्यूजन जदी गुटे इंस्ट्रूमेंट रे एराइज होछि दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट बुझिला दैट्स इट इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज इनकम्प्लीट इज नोन एज इनकोएट इंस्ट्रूमेंट एडारे आउ किछि पचारनी खाली डेफिनेशन टा पचारछि हमगो ऑलवेज इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट को हमें कहया कोन इनकोएट इंस्ट्रूमेंट टा जेतु वर्ड्स गुडा को मिसछि तो मन रखि परिबो एडी अंडरलाइन करो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन कंडीशनली फॉर अ स्पेशल पर्पस एज कोलैटरल सिक्योरिटी एंड नॉट फॉर पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टीज नोन एज एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट कोलैटरल सिक्योरिटी माने कोन जानछ ना जदी लोन नेला टाइम रे किछि गिरवा रखी कि नोच बुझला ना लोन टाइम रे जो सिक्योरिटी रखुछ सेडा को हमें कोन कहया कोलैटरल सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी फॉर लोन हम्म हम्म collateral security बुझिला that's collateral security absolutely तो से कोची कोन इंस्ट्रूमेंट ता कंडीशनली ड्रॉ हेची फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस देयर इज सम पर्पस फॉर व्हिच द इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन किछि पर्पस न थाई कि नै एंड फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी बेसिकली सेडा कोन कोलैटरल सिक्योरिटी पे ड्रॉ होची सो दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट्स बुझिला तासो अगेन फिल इन द ब्लैंक्स को कौन पे
छाड़ मत को टेक्स्ट बुक रो वेट सीरियसली दिल के बुझियो जाओनी जाओनी माउस रे जाओनी इंदेले जाओनी देखिए सेटा तळो को पळोची बट इट्स नॉट स्क्रोलिंग जा हो आसला मते स्टेशन पळेला ळे लागला हेले लारे 30 टा तो काटली थैंक यू गॉड थैंक यू सो मच या 6 नंबर टा को 6 नंबर टा कोन थिला हमरो इनकोएट इंस्ट्रूमेंट एबेडा कोन हैला हाँ हो inchoate instrument तापरे a bill of exchange contains an unconditional order to pay अच्छा ए मु कहि दोचे अगेन fill in the blanks टा मोस्ट इंपोर्टेंट सेते पे मु फर्स्ट सेटा डिस्कस करची the grace period for payment of negotiable instrument other than payable on demand is 3 days हैला 3 days मन रखिबो इंस्ट्रूमेंट्स पेएबल ऑन डिमांड को केबेले ग्रेस पीरियड मिलबोनी ता ना आगा से केतळ मागले से तळ देबारो बुझिला ना तो ग्रेस पीरियड किछि मिलबोनी तापरे द टर्म चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज डिफाइंड इन डैश एक्सप्लेनेशन तो एडा क्रॉस मार्क करि परियो इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन हैला किछि मीनिंग नै से क्वेश्चन रो बेस किछि नै अ बियरर इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड बाय एंडोर्समेंट माने कोन ट्रांसफर करिकि सेडा कोन तारो जहा भी नेगोशिएबिलिटी डा अछि सेडा में कोन करबा एक्सटेंड करबा डैश पार्टीज आर इन्वॉल्वड इन बिल ऑफ एक्सचेंज एडा कहयोनी माडे प्रेम एडा तो को डैश पार्टीज आर इन्वॉल्वड इन बिल ऑफ एक्सचेंज के जण एबे कहितली 3 आयुष प्रॉमिसरी नोट रे 2 आ चेक रे श्रेया check रे 3 when a check is payable across the counter of bank it is called what एडा important marker when a check is payable across the counter of a bank it is known as open check ता तळे थिला dash days grace period is allowed for payment of check एडा भी important marker check को केबेले किछि grace period मिलबोनी जदि जो दिन डेट दिया से दिन पैसा नथिले कोन हबो सेडा बाउंस हबो बुझिला ना नहीं 0 days a check is always payable on due date बढ़िया हाँ हाँ नहीं तू केबे भूल कहू न मु भूल सुनुची जे सुने जिंस कोन हले आहो दबा सुन टिके से कहूचे कौन ग्रेस पीरियड सब इंस्ट्रूमेंट को मिलबो को इंस्ट्रूमेंट को मिलबोनी खाली जो जिनस जाको पेएबल ऑन डिमांड अछि सेडा को मिलबोनी हेले चेक को जदी ग्रेस पीरियड नाही तो सेडा कोन हेइथिबो जेडा पेएबल ऑन डिमांड हेइथिबो इन देल तो मन रखि पारू ना अगर वो इंसान पागल को जानता है तो पागल भी इंसान को जानता होगा तापरे I mean, last question Ruji, bye. If the words not negotiable are used with special crossing in a check, the check is not transferable. Not negotiable go not transferable. If an instrument may be construed माने कौन assumed either as a promissory note or a bill of exchange, it is known as dash. कौन unambiguous कौन पे
ना एज्यूम हेई पारुची कि एडा कि सेडा जानि पारु नाहंती जदि से एज्यूम करि पारियो कोन एदर प्रॉमिसरी नोट एदर बिल ऑफ एक्सचेंज जोडा ले भी चलिबो कहि कि जदि एज्यूम करि पारची तो सेडा हेई थाना कोन हमरा एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट बट एडी कोन कंस्ट्रू करि पारनी सी जानि पारनी कि कोडा कोन आली कहि सो दिस इज अनएम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट तापर या प्रॉमिसरी नोट द बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड मेड पेएबल इन इनलैंड तो कौन मु कहितली पर्सन रेसिडेंट इंडिया ड्रॉन इन इंडिया टू वर्ड्स देखले तमे सेडा जानि दबो हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्वड इन बिल ऑफ एक्सचेंज 3 इफ अ माइनर ड्रॉस प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट इफ अ माइनर ड्रॉस endorses delivers or negotiates an instrument such instrument binds dash all parties to the instrument except the minor बुझला वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन माइनर जदि किछि इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करूची एंडोर्स करची नेगोशिएट करची जहां भी करची तो सबु पार्टी सेडा रे बाध्य होई कि सेतरे इन्वॉल्व होई कि रहि जिवे एक्सेप्ट द माइनर तापर द टर्म अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज डिफाइंड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कोड रे 1 ऑफ सेक्शन सी मु कहितली एडा ऑलरेडी ग्रेस पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अदर देन इज 3 days मु कहिछि ना रिपीट हिच A corporation can be a party to negotiable instrument if dash AO जदि ऑथराइज करची एडा भी इंपोर्टेंट मार्क करो check is a dash bill of exchange check is a form of bill of exchange bill of exchange contains unconditional order incomplete instrument टा कौन incomplete instrument inchoate instrument dash is not a negotiable instrument as per custom and usage check किमिति हला it is not governed by the negotiable act it is governed by the negotiable act तो चेक जेतळ को गवर्न हे होचे नेगोशिएबल एक्ट अंडर रे तो कस्टम और यूसेज अंडर रे बाकी सब पळास बुझिला आयुष सत्रे which of this is not a negotiable instrument as per the act code and share certificate yeah delivery note भी ता सहित आसुची delivery note को promissory note को they are giving some impression कि almost similar अच्छी कहिकी तो टिके मन रखिबेडा the undertaking contained in a promissory note to pay a certain sum of money सबले कोन सेडा unconditional the term negotiable instrument is defined in section 13 तो एडा एउडा किछि पचारि बने से सेक्शन नंबर एते खाली से 6 नंबर दा जहा भी 61A अछि सेडा पचारि पारिबो टिके देखियो came into force on 1882 आ एडा applicable to whole of India where a check is crossed generally the banker on whom it is drawn shall not pay it otherwise than to a banker जदि general crossing होची सेडा कोन हबो shall not pay otherwise to a banker crossing रे जहा भी टाइप्स अछि एडी टिके लेखिबो सिंपल जिंस जागा से पाखरे आगा टिके लेखिबो देखि कि जदि कार किछि डाउट अछि पचरिबो The presumption as to the date of negotiable instrument under section 118 is that every negotiable instrument bearing a date was made or drawn कौन माने गोटे पर्टिकुलर डेट रे सेडा हिची गोटे पर्टिकुलर डेट रे सेडा एंड हबो कहि कि गोटे प्रेजम्पशन रहिबो ना नै हमें ए दिन सेडा स्टार्ट करछु ए दिन सेडा एंड करछु तो सिंपल जिंस हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट क्रॉस अ चेक फॉरेनर तार किछि इन्वॉल्वमेंट आगा नाही under section 118 of the negotiable instrument act it is presumed until the contrary is proved that every transfer of negotiable instrument was made kebe was made obviously सेडा देले मैच्योरिटी पर देले कोन हबो मैच्योरिटी दिन देले कोन हबो मैच्योरिटी आगरे देले जाई कि से इंस्ट्रूमेंट रो किछि भी माने रहयो ना नै बुझिला ना then a check is crossed dash when it bears across its face an addition the name of the banker either with or without the words not negotiable it's special crossing तो मु सेति पे कहै छी क्रॉसिंग रो जहा भी टाइप्स टिके से पाखरे लेखिब सिंपल गुटे गुटे लाइन जिंसो
In a promissory note, the amount of money payable must be certain. If a minor draws, endorses, delivers or negotiates an instrument, such instrument binds all parties to the instrument except the minor. If an instrument may be construed either as promissory note or bill of exchange, कोड आइले consider करि परिबो. It's ambiguous instrument. Ambiguous ର meaning कौन कहथिली? Ambiguous means हाँ जे meaning कौन कहथिले? Confusion. Ambiguous means confusion. तो ए भितरे तीन चारटा जिनस आसीबो कोन ना वर्ड्स जदी भूल लिखि दउची, फिगर्स भूल लिखि दउची, टाइम भूल लिखि दउची, जहां भी जदी भूल लिखिगी कंफ्यूजन एरा होची यूजर को तो कौन हबो सेटा ऑब्वियसली ambiguous instrument हबो. The term negotiation in section 14 of the act refers to dash. 13. The transfer of a bill of exchange, promissory note or a check to any person so as to constitute the person the holder thereof. एडा होची तर definition टा. माने कोन negotiation रो meaning होची कोन से इमिति प्रकार ट्रांसफर करे जिमति कि ताको rights and liabilities भी ता सहित endorse की transfer हे जिवो. The term negotiable instrument is defined in dash. Section 13. एडा टिके कहिची already. Check is a bill of exchange. Ayush ए दिडा तु कह. A bill of exchange contains an unconditional order. The undertaking, how to correct? The undertaking contained in promissory note to pay a certain sum of money is dash. कौन? Promissory note टा कोई थिली मु अनकंडीशनल हैला तो सब जगह हमर अनकंडीशनल लगा थिला मु जो से डिफरेंस चार्ट जो देखे थिले सेटा टिके रिवाइज करले तमे जानि परबो. ठीक अछि. तो क्रॉसिंग रो जहा भी कांसेप्ट टिके डिस्कस करिया ना. हेडिंग दियो क्रॉसिंग. एडा मु आउथरे सेडा धरी गले से आउथरे आसियो ना नै जाना नै मते. नाय आसियो नि कुछ. हैला तो हेडिंग दियो क्रॉसिंग मु मोर टेक्स्ट बुक रे पढेबी. आ किछि कार डाउट अछि पचरी परिबो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रे जहा बुझेई छी वंस देखो. I am giving you 2 minutes. देखो मु लेखिले भितरे देखि को किछि डाउट अछि ले. वाह कोई इज्जत ही नहीं है. Crossing a check refers to instructing the paying bank to only pay the check 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 through a bank and not cash through a bank and not cash over the counter and not cash over the counter not cash over the counter.
थ्री टाइप्स अच्छे हमारा जनरल स्पेशल एंड नॉट नेगोशिएबल टेक्स्ट बुक रे दीडा देछि ना जनरल स्पेशल एंड नॉट नेगोशिएबल जनरल रखो two parallel lines drawn on the check drawn on the check drawn on the check with or without the words with or without the words with or without the words and company underscores भितर लेख and company सेटार मीनिंग होची कोन check is drawn check drawn is only payable to collecting bank is only payable to collecting bank माने आ गोटे बैंक को आगे से पेमेंट करि परिबो किबा ट्रांसफर करि परिबो गोटे अकाउंट को दिस इज जनरल क्रॉसिंग एडी कोन हबो चेक कैन ओनली बी paid to the specific bank गोटे स्पेसिफिक बैंक रो ना लिखाई थियो कि अकाउंट रो ना लिखाई थियो कि जहाँ भी स्पेसिफिकली से पर्टिकुलर अकाउंट को अगर सेटा कोन हबो पेमेंट हे परिबो एडी कोन चेक कैन बी transferred but not negotiated माने जनरली तमे हाथो देगी ताको पहुंचाली कोई परियो बट ताको ओनरशिप राइट्स गुडा को कि लायबिलिटीज गुडा को दे परियोन दिस इज व्हेन द क्रॉसिंग सेज नॉट नेगोशिएबल बुझिला तीनडा क्लियरली क्रॉसिंग रो कांसेप्ट होची एतिकी एनी डाउट्स देखो वंस चेक आउट जो क्वेश्चंस आसुची सेटा डिस्कस करली स्टिल सेटा मु देखिची बट तमन जदी किछि डाउट अछि तो पछरी पारे ठीक अछि थैंक यू